Yes. So good morning, good evening once again. Let us start with the numericals from the chapter Magnetism. Okay, I hope you can see the screen and the first question on it. Okay, all these are your textbook questions. There are only 5 to 6 questions in your textbooks from this chapter. So it will be very easy. तो जल्दी हो जाएगा. चलो ठीक है, आज के लेक्चर में मोस्टली खत्म हो जाएगा. Even we'll try to solve some more numericals from outside, or let us try to solve some solved examples from the textbook. Okay, so let us read this question. The magnetic pole of a bar magnet with pole strength 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of a bar magnet. Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे एक पोल जो है वो एक मैग्नेट से सेंटर, मैग्नेट के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे है. ठीक है. Bar magnet has a pole strength of 200 ampere meter and has a length of 5 centimeter. Okay. If the magnetic pole is on the axis of the bar magnet, find out the force acting on the magnetic pole. Yes. Okay. So see here, the force acting on that magnetic pole is to be found out. Let us try to draw the diagram first of all. Suppose this is the magnet here. Okay. ठीक है, तो ये यहाँ पे मैग्नेट हमको दिखाई दे रहा है. इसके दो पोल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द साउथ पोल सपोज फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज एक्चुअली द नॉर्थ पोल हियर. ओके, एंड द एक्सिस ऑफ दिस मैग्नेट कैन बी ड्रॉन हियर टू बी the line joining this south and north pole here like this. Okay, so this can be supposed to be the axis. Okay, and it is given here that on the axis of this bar magnet there is a single pole. अभी ये बात अभी थोड़ा समय के लिए बाजू में रखो कि the single pole doesn't exist. ये बात थोड़े समय के लिए बाजू में रखो, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर ये हमको एज्यूम करना है कि the single magnetic pole exists because it is already given there. See, just read the first line or first statement here. The magnetic pole of a bar magnet with pole strength 100 ampere meter. Okay, तो मतलब चलो ठीक है, वो भी पोल स्ट्रेंथ है और वो एक पर्टिकुलर बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है, बट द फुल बार मैग्नेट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड हियर. ओके, तो पूरा बार मैग्नेट जो है वो हमको कंसिडर नहीं करना है. तो दिस इज सपोज द अनदर बार मैग्नेट which is going to be kept here like this. Okay, but we are not going to focus on the whole magnet actually. So the magnet will be like this. तो ये पूरा जो बार मैग्नेट है वो ऐसा हो सकता है. उसका साउथ पोल कहाँ पे हमको पता नहीं, या दूसरा पोल कहाँ पे ये हमको पता नहीं, दिया ही नहीं है. लेकिन इतना जरूर पता है कि इस बार मैग्नेट का जो एक पोल है, यहाँ पे एक पोल उसका रहने वाला है जिसका पोल स्ट्रेंथ एक्चुअली हमको दे रखा है. ठीक है, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है तो वो यहाँ पे, यस, दिस इज द पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ 100 एम्पियर मीटर. ये देखो, ये जो 100 एम्पियर मीटर जो है वो एक्चुअली इस पोल का पोल स्ट्रेंथ दे रखा है, जिसका दूसरा पोल के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, या उस मैग्नेट का लेंथ कितना है या उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. जस्ट इतना ही दिया हुआ है कि 100 एम्पियर मीटर इतना इसका पोल का स्ट्रेंथ है बस. और ये पोल स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट. ओके, तो ये जो बार मैग्नेट यहाँ पे हमको दिख रहा है इसके सेंटर से, मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ऐसा दे रखा है. ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर हियर. ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे 20 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो ऑन द एक्सिस. ओके, तो वो भी एक्सिस पे है. ठीक है,
चलो अभी यहाँ पे, और ये जो बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है, मतलब बार मैग्नेट के अंदर जो दो मैग्नेटिक पोल्स है उनका पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे 200 एम्पियर मीटर करके दिया हुआ है। यस, सो इस पोल का जो स्ट्रेंथ है उसको हम बोल देंगे, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 200 एम्पियर मीटर। सो ऑब्वियसली इस नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है तो वो एक्चुअली 200 एम्पियर मीटर रहेगा, प्लस 200 एम्पियर मीटर एक्चुअली। और यहाँ पे ये जो साउथ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली माइनस ऑफ 200 एम्पियर मीटर रहेगा जरूर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इस पोल के ऊपर, ये सिंगल पोल जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पोल के ऊपर कितना फोर्स इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्ट होगा, तो वो हमको एक्चुअली ढूंढ के निकालना है। सो इफ यू जस्ट कंसिडर द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक पोल टू बी इन दिस डायरेक्शन हियर, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे अगर हम मान लेते हैं, so this force F here can actually be found out by using the special formula, which is the relationship between the pole strength and the the relationship between the force and magnetic induction। क्योंकि यहाँ पे इस प्लेस पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे होगा, सपोज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट इज सपोज गोइंग टू बी बी हियर। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन अगर मान लेते हैं कि बी है, yes, okay, so B is going to be the magnetic induction, then we can just be able to find out the force at this pole to be simply equal to, force is actually equal to the pole strength, that is M, into magnetic induction at that point. So this is the formula, we have to use it here. Okay, but the question here is that the pole strength is already known। ये जो M है ये पोल स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ठीक है, 100 एम्पियर मीटर, वो हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं 100 एम्पियर मीटर। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस मैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ मच इज दिस हियर, ये मैग्नेटिक इंडक्शन हमको पता ही नहीं है। उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हु इज क्रिएटिंग दिस मैग्नेटिक इंडक्शन, हु इज क्रिएटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो आंसर मिलेगा ये जो बार मैग्नेट है, दिस बार मैग्नेट इज गोइंग टू क्रिएट दिस मैग्नेटिक फील्ड हियर। ओके, तो अगर ये बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसी भी बार मैग्नेट के द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कई बार देखा है। और ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर हियर। तो इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर है, जबकि हमको जो निकालना है मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन जो निकालना है, तो वो लेंथ, वो डिस्टेंस एक्चुअली 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। सो अभी इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि ये बहुत छोटा है सो दैट वी कैन जस्ट निग्लेक्ट इट। तो इसके लिए हमको ये जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बी एक्सिस का, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट along the axis of a bar magnet is actually given by the formula mu naught upon 4 pi into, here it is, 2mr upon r square minus l square and the whole raised to 2। okay, ये हमको ऑलरेडी पता है। so if we just use it here, okay, so b axis is actually going to be, b axis मतलब ही b जो हमको निकालना है यहाँ पे। so b will actually be equal to mu naught upon 4 pi, where we already know the value of mu naught is actually 4 pi into 10 raised to minus 7। ये अच्छी तरह से याद रख लो। okay, and that is to be divided by 4 pi as it is, and that is to be again multiplied by the magnetic moment of the magnet which produces the magnetic field। we have to replace it here। okay, so abhi how will you find out the magnetic moment of this magnet here? तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो वो निकालने के लिए हमको उसका मैग्नेटिक लेंथ चाहिए, जो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्चुअली दे रखा है, बराबर। 5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट एक्चुअली। ओके, सो अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ ऑलरेडी हमको पता है और उसका पोल स्ट्रेंथ भी तो हमको पता है, देखो एक पोल का पोल स्ट्रेंथ भी हमको पता है, तो हमको ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे
ये जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे हमको चाहिए, ये देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको हम एक्चुअली कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m इंटू 12 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, m इंटू 12। एंड अभी यहाँ पे चलो ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट सेपरेटली हियर। सो इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट which is producing the magnetic field here, so it will be small m. अब यहाँ पे small m मतलब ये नहीं है, this is not the pole strength of this magnet which is producing the magnetic moment actually. तो और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो मैग्नेट, उसका पोल स्ट्रेंथ हमको यहाँ पे यूज करना है, जो कि 200 दिया हुआ है। वी कैन जस्ट कॉल इट एज m डैश, ओके, इनटू 2l, so that we can just get this as m dash is actually going to be 200 and 2l, that is the magnetic length here is actually going to be 5 centimeter. अभी जैसा कि हम जानते हैं सेंटीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सो वील हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड वी कैन गेट दिस एज 5 into 10 raised to minus 2, so that these two zeros and 10 raised to minus 2 just gets cancelled and 2 into 5 becomes 10 simply. So we can just have this 10 meter ampere meter square to be the value of capital M, which has to be replaced here in the bracket. So ये 10 यहाँ पे हमने replace कर दिया, और इसके साथ r का जो वैल्यू है, r मतलब ये डिस्टेंस जो है हमको ऑलरेडी पता है 20 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो वो हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है। बट अगेन डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो 20 सेंटीमीटर मींस इट विल बी 0.2 मीटर एक्चुअली, so we can just put it as 0.2 meter. Yes, and then we can just divide this whole thing by r square minus l square and whole square also. तो अभी यहाँ पे इसमें एक सिंपल सा टेक्निक हमको यूज करना है। देखो ये याद रखो अच्छी तरह से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है तो इसमें r और l दोनों अगर सेम यूनिट में है, जैसे देखो यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 20 है, और l का वैल्यू कितना है, अच्छा l का वैल्यू तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा राइट। इसका आधा अगर करेंगे तो वो l का वैल्यू एक्चुअली 2.5 आएगा, क्योंकि 2l इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर ना। 2l का वैल्यू है ये जो 5 सेंटीमीटर जो दिया है ना, वो 2l का वैल्यू है, जिसमें ये आधा l हुआ करता है और बचा हुआ भी l हुआ करता है। तो इसलिए अगर 2l का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो l का वैल्यू सिंपली 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। बट आफ्टर ऑल दिस l एंड r both are given in centimeter only, so we can just keep them in centimeter only. बट इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे और उसका भी स्क्वायर, ब्रैकेट का भी स्क्वायर किया जा रहा है, तो मतलब सेंटीमीटर का फोर्थ पावर हो गया। तो सेंटीमीटर का फोर्थ पावर मतलब अब देखो 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू 10 raised to minus 2 मीटर, ये सब जानते हैं ऑलरेडी। ओके, सो इफ यू जस्ट रेज इट बाय फोर्थ पावर, तो यहाँ पे फोर्थ पावर से अगर दोनों तरफ रेज कर देंगे तो क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर रेज टू 4 हियर will actually be obtained to be 10 raised to minus 8 meter raised to 4, correct है। So in that case we can just get this in terms of meters, meter raised 10 raised to minus 8 meter raised to 4 here। तो ये हमको यहाँ पे यूज करना होगा। So if you just multiply this whole thing by 10 raised to minus 8, then we are free to keep this r square and l square in centimeter only, doesn't matter। So we can just replace this r square by 20 here, so that it will become 20 centimeter का square and minus ये l square where l is actually going to be 2.5, so 2.5 और उसका भी square। चलो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अभी इसको हमको आगे सॉल्व करना है, so that we can just see that this 4 pi just gets cancelled and this 10 into 2 0.2, ये 10 into 0.2 जो है वो तो 2 बनेगा, और ये 2 into 2 क्या बनेगा 4 बन जाएगा राइट। So we can just write this 4 in the numerator into 10 raised to minus 7 here in the numerator, and it is multiplied with 10 raised to minus 8, which goes up and becomes 10 raised to plus 8 here. So this is 10 raised to plus 8 and that is to be whole divided by 20 का whole square जो कि actually 400 होता है, और उसमें से 2.5 का whole square जो कि हमको ऑलरेडी पता है 6.25 होगा जरूर। So if we just subtract this and don't forget that we have to square this also, इसको भी हमको स्क्वायर करना है अभी, ठीक है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो जैसे कि हम जानते हैं 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 बिकम्स 10 रेज टू 1 ओनली, ये -7 और 10 रेज टू 8
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो सिंपली 10⁻1 आ जाएगा, और वो 10⁻1 into 4 actually becomes 40 only. So here we can just get this as 40 simply. Okay, so ये 40 हो गया, और ठीक है, तो 400 minus 6.25, if we just work it out, then we can be able to get this as 393.75, right? So here it is going to be 393.75, और उसका हमको स्क्वायर भी करना है, ठीक है। यस, एक्चुअली ये 2.5 जो है ना, वो 20 के सामने हम ये भी बोल सकते हैं कि वो निग्लिजिबल है, तो उसको यूज करके हम वो वाला दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो इसका अप्रोक्सीमेशन है एक्चुअली, उसे भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट डू इट बाय दिस मेथड हियर, दैट इज 40 अपॉन द स्क्वायर ऑफ दिस 393.75। ओके, सो उसके लिए हमको कैलकुलेटर लगेगा, और जस्ट लॉग टेबल्स विल बी सफिशिएंट। यस, सो दिस कैलकुलेटर विल गिव अस 40 divided by, sorry, the square of 393.75। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल रहा है एक्चुअली 155,039.0625। Forget about it, we can just approximate it as 15504। okay, so it is going to be 15504 0। okay, so this is actually the square, and then if you just take the ratio of these two, then we can be able to get this 40, that is divided by 155,040, which actually comes out to be 2.57 or 2.58 approximately into 10 raised to minus 4. Okay, so 2.58 into 10 raised to minus 4. 2.58 into 10 raised to minus 4. Yes, this is actually the answer. No, not answer. It is the magnetic induction only. But just don't forget that we are not to find out the magnetic induction. Actually, we have to find out the force here, which is actually going to be magnetic moment. Sorry, magnetic pole strength multiplied by magnetic induction. So finally, we can just be able to get the force to be simply M into capital B here, where M is actually 100 ampere meter. So we can just replace it by that 100 into 10 raised 100 into B, which is 2.58 into 10 raised to minus 4. So that this 10 raised to minus 4 and 10 raised to minus 2 will just cancel each other. So, or just reduce, and we can be left with simply force to be as 2.58 into 10 raised to minus 2 here, and that is going to be in Newton. Okay. Yes, but as we can just see here that this value is very close and it is actually accurate. Okay, ये जो value है जो हमने अभी derive किया है वो actually accurate है, ज़्यादा accurate हो गया क्योंकि हमने ये वाला formula use किया. But for just sake of simplicity, we can just avoid this formula and just consider the approximation. अगर हमने approximation अगर use किया तो वो थोड़ा सा simple हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं when this r square or r is very very large than L, then in that case the magnetic induction is actually given by the formula that is mu naught upon 4 pi into simply 2m upon r cube. That's it. So if we just use it here, then mu naught upon 4 pi का value जैसा कि आप जानते हो ये 10 raised to minus 7 है. We can just directly put it here. Yes, this is 10 raised to minus 7, and then 2 times of m, where m is actually already found out here, that is 10 ampere meter square. So we can just replace it by that, and r cube, where r is actually going to be 20 centimeter. So if we just cube it, then अब यहाँ पे 20 का क्यूब हमको करना है, लेकिन just don't forget that this is in centimeter. तो सेंटीमीटर का क्यूब अगर करेंगे
तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जरूर. Okay, so this 10⁻⁻⁶ is due to this centimeter. Okay, so we can just be able to solve this further and get this as, so 2 into 10 into 10⁻⁶ 7 and 10⁻+6 goes up, so that we can just be able to get this 2 into 10 into 10⁻⁻7 into 10 raised to minus sorry plus 6. Okay, and that is to be whole divided by 20 का क्यूब, जो हमको ऑलरेडी पता है 8000 हुआ करता है. So it will actually be, अब यहाँ पे 10 into 10⁻⁶ becomes 10⁻⁷, and 10⁻⁻7 just gets completely cancelled, and we are left with simply 2 upon 8000, which is actually equal to 1 upon 4000. बराबर, which can also be written as, अगर इसको हमने 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वहां पे आ जाएगा ऊपर 25 और नीचे आएगा 100 के ऊपर 3 zeros, तो ये बन गया हमारा. Yes, so this is the magnetic induction actually, which can also be written as 25 into 10⁻⁻5. Okay, so B actually happens to be simply 25 into 10⁻⁻5, but we want to find out the force. ओके, बी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली आएगा 2.5 into 10⁻⁻4 टेस्ला. ओके, विच इज ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन्ड इट हियर. तो यहाँ पे सिर्फ 2.58 एक्स्ट्रा आया था, क्योंकि हमने जो एक्यूरेट निकाला ना, इसलिए अगर हमने वो निगलेक्ट कर दिया तो सिर्फ 2.5 आ जाता है, जो वो भी इतना भी ज्यादा इनएक्यूरेट नहीं है, इतना भी ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं है. इट इज सफिशिएंट, वेरी क्लोज टू दिस नंबर. And from this also we can just get the force to be simply same as this one here. Okay, so 2.5 into 10⁻⁻2 Newton, ये मिल जाएगा हमको force का value. Okay, yes, this is the first question. Let us see the next question. Just read it carefully. A magnet makes an angle of 45 degree with the horizontal in the plane, making an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Find the actual value of angle of dip at that place. Okay. ये actually ठीक है, ये इसके लिए आपको एक थोड़ा सा और एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा. Let us see it next time. Let us do the next numerical. Yes, this is the third question here. That is, two small and similar bar magnets have magnetic dipole moment of 1 ampere meter square each. Okay, दो magnets का magnetic moment दिया हुआ है 1 ampere meter square. Okay, they are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. Okay, तो उनका axis जो है वो perpendicular रखा हुआ है. A line drawn through the axis of one passes through the center of other. Okay, तो मतलब एक के एक्सिस में से निकाला हुआ जो लाइन है वो दूसरे के सेंटर में से पास होता है और दोनों परपेंडिकुलर है. ठीक है. If the distance between their centers is 2 meters, find the magnetic field at a midpoint of the line joining the two centers. Okay, so see here, there are two magnets given here. Okay, so let us take this as a magnet. This is actually the first magnet, suppose. Okay, which is kept like this, and there is another magnet which is just kept here, but it is kept perpendicular actually. Okay, like this. And it is also given that both of these magnets are kept in such a way that their axes are just perpendicular to each other. And also it is given that the line passing through the center of one of them, means axis of one of them, just passes through the center of other, means like this. Okay, ये दिया हुआ है यहाँ पे.
देखो ठीक से, तो अगर ऐसा है तो उस केस में इन दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो तो सेम है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट हियर विच इज द मिड पॉइंट। ओके, ये जो है मिड पॉइंट है, एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, मतलब उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है। मतलब ये देखो यहाँ पे ये जो सेंटर इस मैग्नेट का है और इस दूसरे मैग्नेट का जो सेंटर यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस जो है तो वो 2 मीटर का दिया हुआ है। ये डिस्टेंस एक्चुअली 2 मीटर है, समझा ठीक से? Yes, this distance is actually going to be 2 meter. So obviously, if we just break this 2 meter in two different parts, two equal parts, then it will be 1 meter each, right? So if we just check, then this distance will actually be 1 meter here up to the midpoint here. Okay, तो इस मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो 1 मीटर आएगा, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर ही होगा, बिल्कुल। So this distance is also going to be 1 meter only. Okay, so both of these distances are going to be 1 meter here. And if we just consider this magnet, first magnet here of magnetic moment 1 ampere meter square. Okay, and the second magnet is also going to be a magnet of magnetic moment 1 ampere meter square. Okay, so इसका भी magnetic moment 1 ampere meter square है। ठीक है, let us call these as m1 and m2। बोले अभी ये बात अलग है कि इन दोनों का वैल्यू तो एक ही है, लेकिन फिर भी just for differentiation we can just call them as m1 and m2 here। Okay, and the magnetic induction at this point P here, which is produced by m1, will be denoted by b1। Okay, but as we already know that if suppose this is the north pole and this is the south pole of this magnet, first magnet, then the magnetic induction at the point P here due to this first magnet will actually be directed in the same direction as that of the magnetic moment, which is from south to north। So it will actually be directed in this direction here। Okay, P point पे जो magnetic induction बनेगा इस first magnet की वजह से, तो वो इस direction में directed होगा, उसको हम B1 बोल सकते हैं। ठीक है, we can just call it as B1। Yes, and at the same time the same point P actually happens to be on the equator of this second magnet here। Okay, so ये जो point P जो है वो एक्चुअली इस सेकंड वाले मैग्नेट के इक्वेटर पे है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली साउथ पोल है और ये पॉइंट का नॉर्थ पोल है, तो उस केस में हम देख सकते हैं, ये चलो उल्टा कर देते हैं, वैसे भी वैसा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोल सकते हैं सपोज साउथ पोल। तो यहाँ पे इस मैग्नेट की वजह से जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 है, उसकी वजह से भी यहाँ पे इस पॉइंट P पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किस डायरेक्शन में होगा, तो उसमें हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है तो वो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में है, बराबर। और हम जानते हैं कि इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि सेकेंड मैग्नेट की वजह से यहाँ पे पैदा होगा, जिसको हम हमारे रेफरेंस के लिए B2 बोल सकते हैं जरूर। Just we can call it as B2 here, which is the magnetic induction produced due to this second magnet here। Okay, and then now we can just try to find out the resultant of both of these magnetic fields here। So if we just try to find it out, then we'll have to complete this parallelogram here। तो ये पैराग्राम अगर हम कंप्लीट कर देंगे, क्या पैराग्राम का है वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा एक्चुअली, तो इस रेक्टेंगल को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ओके, so this diagonal will actually represent the resultant of these two magnetic inductions, and that will actually be the net magnetic field at the point P here, which is to be found out। वही हमको निकालना है यहाँ पे। So in order to find out this P here, sorry, magnetic induction at point
P here, that is denoted by B. Okay, we'll have to use the पैराग्राम लॉ, और वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो हमको यूज करना पड़ेगा. जैसा कि हम जानते हैं, इफ सपोज देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस, then their resultant is given by the formula b is equal to root of b1 square plus b2 square. We can also see this formula as a special case of the formula for resultant of two vectors when the angle between them is 90 degree, because when angle between the two vectors is 90 degree, the cos 90 becomes actually 0, and since cos 90 becomes 0, we can just expect the third term in that formula to get vanished. ये जो वाला जो formula है कि नहीं, r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे हमको r मतलब रिजल्टेंट मतलब b है, जिसमें p जो है वो b1 से रिप्लेस होने वाला है और q जो है वो b2 से रिप्लेस होने वाला है. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं b1 और b2 इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से और cos 90 का वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा. और अगर ये टर्म गायब हो जाता है तो सिंपली हमको रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर यहाँ पे बचा रहता है, which is the value of net magnetic induction at point P here, right? So ये हम कर सकते हैं आराम से. बट इसमें अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको ना B1 पता है ना ही B2 पता है. So how can we find out B here? तो उसके लिए हमको B1 और B2 निकालने पड़ेंगे. So let us try to find out B1 as well as B2 here. So B1 is the magnetic induction at point P due to the magnet which is ये पॉइंट P जो है ना, ये इस फर्स्ट मैग्नेट के एक्सिस पे है, राइट? तो एक्सिस पे होने की वजह से हमको मैग्नेटिक इंडक्शन B1 निकालने के लिए एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m m1 एक्चुअली अपॉन r क्यूब. वी कैन कॉल इट एज r1 क्यूब. ओके, where r1 is going to be this distance here, which is no doubt it is 1 meter only, and this is actually going to be r2 here, which is again 1 meter only. ठीक है, so we can just get this r1 cube here replaced. So b1 is, अभी देखो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू हमने लास्ट इसमें भी यूज किया था, जो कि 10⁻⁻⁷ होता है, याद रख लो ठीक से. इट इज जस्ट constant fixed value which is already given in the exam, and that is to be multiplied with 2 times of m1, where m1 is going to be 1 ampere meter square here. So this is 1, and that is to be divided by r1 cube, where r1 is again 1, and that is in also meter, so no need to convert anything. So we can just get 2 into 10⁻⁻⁷ simply. Okay, so b1 happens to be 2 into 10⁻⁻⁷ Tesla. Okay, and what about b2 here? So if you just check b2, its formula is okay. अब यहाँ पे b2 मतलब क्या है? It is the magnetic induction produced due to a magnet at the equatorial point, right? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे, क्योंकि ये सेकेंड मैग्नेट के लिए ये पॉइंट P जो है वो इक्वेटर पे दिख रहा है, राइट? इसीलिए इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो उसके लिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into m upon r cube, right? So simply m upon r cube, ये simplify करना है. So as we can just see, 10 mu naught upon 4 pi happens to be 10⁻⁷ as before, and m का वैल्यू 1, m2 आएगा यहाँ पे, और इवन r2 क्यूब आएगा. Okay, and but it's okay, m2 and r2 is also 1 each, and therefore we can just put it here and expect this answer or the value of m2 here, b2 here, to be simply 1 into 10⁻⁻⁷. Okay, so 1 into 10⁻⁻⁷, and that is again in Tesla. Okay, so if we just put these values here, so b के लिए हमको क्या करना है? रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये करना होगा. so b1 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि 2 into 10⁻⁷ है, और उसका स्क्वायर, प्लस b2 का वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी है 1 into 10⁻⁷ एज इट इज, और उसका भी हमको स्क्वायर करना है.
और उसका फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी इसमें एक बात याद रखो कि अगर हम सपोज ये स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻14 एंड हियर इट विल बी प्लस 1 का स्क्वायर तो चलो 1 ही बनेगा, बट 10⁻⁻7 का जो स्क्वायर है तो वो एक्चुअली 10⁻⁻14 आ जाएगा। एंड देन वी कैन बी एबल टू गेट दिस टू बी सिंपली, तो यहाँ पे 10⁻⁻14 को अगर हम कॉमन ले लेते तो वहाँ पे हमको आ जाएगा 4 + 1 which will be left inside and will be 10⁻⁻14 here. And if we just simplify this and just separate the square root for both the factors here, then we can just be able to get this as a √5 as it is into 10⁻⁻7, and that is going to be in Tesla. Okay, so this is actually going to be the final answer we can just expect here. Okay, yes, which is already there. ओके, वन मोर थिंग हियर, अभी अगर यहाँ पे इन दोनों के अंदर अगर 10⁻⁷ 10⁻7 ऑलरेडी है तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का एक सिंपलीफाइड फॉर्म भी तुम यूज कर सकते हो। सो दिस विल एक्चुअली हैपन टू बी इक्वल टू, देखो जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है तो वो हम डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख देते हैं तो यहाँ पे √(b1² + b2²), लेकिन हम जानते हैं कि 10⁻⁷ is already present in both of these, b1 as well as b2, so we can just keep it aside and just take this coefficients only, ये 2 और 1 इन दोनों को ही हमको यहाँ पे रूट के अंदर लेना है। so if we just put this b1 as 2² and b2 is replaced by 1², 1 only, that means it will be 1², and यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो गया, and this whole thing is to be multiplied with 10⁻⁷, which will be outside the square root sign. So in that case we can just be able to get this √5, क्योंकि हमको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 + 1 becomes 5, and we can just be able to get this as √5, and that is multiplied with 10⁻⁷, which is kept as it is, and that is going to be in Tesla, which is the final answer. So no need to do all these things as it is. Okay, so we can just do it in this way also, but it requires this fact to be remembered. If suppose this b1 and b2 contain some factor in common, then we can just take it out as it is and just जो कोएफिशिएंट्स उसके है या जो बचे हुए जो वैल्यूज है वो हम वहाँ पे b1 और b2 के बदले रख सकते हैं, जिससे हमको सेम ही आंसर मिल जाएगा जो हमको पहले भी ऑलरेडी मिला है। यस, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. There is a fourth question here. A circular magnet is made with its north pole at the center, separated from surroundings circular south pole by an air gap. Okay, draw the magnetic field lines in the gap. The magnet is hypothetical magnet. Draw the diagram to illustrate the magnetic lines of force between the south pole of such magnets. Okay, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको सर्कुलर मैग्नेट दिया हुआ है। Okay, so suppose this is the circular magnet made with its south pole at the center. Okay, तो south pole यहाँ पे center पे है, separated from the surrounding circular south pole. Okay, north pole is at the center, separated from the surroundings circular south pole by an air gap. वर्डिंग्स में थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि magnetic lines of force always start from north pole and up to the end up to the south pole outside the magnet, and the magnetic lines of force will just start from south pole and move to the north pole inside the magnet. तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं
लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग इतना क्लियर यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। सर्कुलर मैग्नेट इज मेड विथ द नॉर्थ पोल एट इट्स सेंटर। मतलब सेंटर पे सपोज नॉर्थ पोल है, सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कुलर साउथ पोल। ओके, मतलब ये सपोज सराउंडिंग सेपरेटेड साउथ पोल है। दिस इज सपोज द साउथ पोल एंड सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल एट द सेंटर। ये नॉर्थ पोल है सपोज, ठीक है। तो ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, सो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम साउथ नॉर्थ एंड एंड अप टू द साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, दैट मीन्स इन एयर। तो एयर के अंदर लाइंस ऐसे जाएंगे, बट मैग्नेट, ये तो दो मैग्नेट हो गए। Just forget about it. We'll just discuss it later. Let us see the next question. I think this is the last question. Two bar magnets are placed on straight line with their north poles facing each other on a horizontal surface. Draw the magnetic lines of force around them. Mark the position of any neutral points in the diagram. Okay, it's very easy actually. देखो, अगर ये दो magnets है, suppose this is the first magnet, okay, and this is suppose the another one, and suppose their north poles are just facing each other. So ये जो उसका नॉर्थ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो वो अगर फेसिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दिस फर्स्ट मैग्नेट विल जस्ट स्टार्ट लाइक दिस, and this one will just be like this, and this will be the null point here. Okay, neutral point we can say, where the magnetic field becomes zero because there is no lines of force passing through this point here, because lines of force always repel each other. Okay, so because of that, the lines of force can be drawn like this. Even we can just continue this here. So इस टाइप के भी लाइंस ऑफ फोर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी वैसे ही होगा। Okay, sufficient. So in this way we can just draw the lines of force of these magnets here. Okay, चलो ठीक है। So let us stop here. Okay, so if you have some doubt, you can just sort it out and just discuss in the next lecture. And if you have no doubt, then we can just start with the next chapter, that is electromagnetic waves, in the next lecture. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स का जो नेक्स्ट इसका आगे का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।